Learning experiences and criteria for effective organization of learning experiences. आपने देखा कि learning experiences को हम suggest कर सकते हैं and we can follow certain principles and we can identify certain characteristics to attain the objectives against which learning experiences are being proposed. Next question was how to organize. हमने देखा कि हम vertically और horizontally ensure कर सकते हैं कि learning experiences organized हैं. When this relationship is maintained, we can say that there will be a cumulative effect and students will be learning as per desired objectives. Objectives हम जानते हैं कि कुछ content knowledge के लिए होते हैं, कुछ skill development के लिए और कुछ values और attitudes के लिए तरतीब दिए जाते हैं. Next question is effective organization का criteria क्या है? Unless we follow any criteria, we cannot ensure that there be a vertical and horizontal relationship between and among the learning experiences which are being designed in any curriculum or proposed for any curriculum. The criteria are, first is continuity. We have to ensure कि एक तसलसल है, कंटिन्यूटी है लर्निंग एक्सपीरियंसेस में जो भी हम किसी ग्रेड लेवल पर प्रपोज करना चाहते हैं. सेकेंड इज देयर हैज टू बी अ सीक्वेंस इन लर्निंग एक्सपीरियंसेस कि एक लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो आपने शुरू में दिया आने वाला लर्निंग एक्सपीरियंस उसके ऊपर डेवलप करेगा. सो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैज टू बी इन कंटिन्यूटी फर्स्ट थिंग and then there has to be a sequence. So हमें एक तरतीब को फॉलो करना पड़ेगा. क्या हम सादा से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे या हम कॉम्प्लेक्स से सादा की तरफ जाएंगे? जब हम लर्निंग एक्सपीरियंस को तरतीब देते हैं खास तौर पे करिकुलम के लिए और एलिमेंट्री लेवल पर, सो वी इंश्योर दैट वी डिजाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन सच अ वे दैट एक तो तसलसल है, दूसरा हम सादा से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं. थर्ड इज इंटीग्रेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीग्रेशन का क्या मतलब है कि तमाम लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपस में किसी ना किसी किस्म का राब्ता रखते हैं और वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं या एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. सो द क्राइटेरिया फॉर लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू बी ऑर्गेनाइज्ड properly is that we have to ensure there is continuity, there is sequence and there is integration. आइए देखते हैं वन बाय वन जब हम continuity, sequence और integration कहते हैं तो उसका क्या मतलब है और चंद मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. Continuity एक तसलसल किस तरह से बरकरार रखा जाए जब हम करिकुलम डेवलप करते हैं. Continuity is basically, it is something which will ensure कि vertical relationship को किसी ना किसी तौर पर रखा जा रहा है और एक vertical reiteration of the concepts and the skills is taking place. जिसका क्या मतलब है कि हम ये चाहते हैं कि जब ग्रेड 6 से 7th में बच्चा चाहे तो एक कंटिन्यूटी या तसलसल होना चाहिए जो भी कंटेंट आप पढ़ाना चाहते हैं या जिस किस्म के ऑपरेशनल स्किल्स आप बच्चों में पैदा करना चाहते हैं और कोई भी एटीट्यूड या वैल्यूज जो हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं. सो कंटिन्यूटी इज रिक्वायर्ड व्हेन वी से दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम एज पर द एस्पेक्ट ऑफ वर्टिकल रिलेशनशिप. सो वी विल हैव टू इंश्योर कि वहां पर एक तसलसल है और हम रिपीट कर रहे हैं चीजों को, बच्चों को एनेबल कर रहे हैं कि वो रिव्यू करें, रिवाइज करें जब वो एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू डेवलप रीडिंग स्किल्स इन सोशल स्टडीज मटेरियल, सोशल स्टडीज का जितना भी मटेरियल या किताबें होती हैं हम ये चाहते हैं कि बच्चे रीडिंग स्किल्स को डेवलप करें मुख्तलिफ तरह के सोशल स्टडीज के मटेरियल को पढ़ने के लिए या टेक्स्ट को पढ़ने के लिए. While we will develop the curriculum and we have this kind of a learning experience, that objective is that the skill has to be developed.
لرننگ ایکسپیرئنس ہیز ٹو انشور کہ ایک تسلسل قائم ہے ایک گریڈ سے دوسرے گریڈ میں جاتے ہوئے. جب آپ کریکولم ڈیولپمنٹ کریں گے یا کریکولم ڈیولپ کریں گے تو آپ اس کو کریکولم میں کس طرح سے شو کریں گے. اٹ ول اپیئر ان دا کریکولم that this reading skill is repeated and we are using different types of materials in social studies which is complex as compared to the previous grade اور آنے والے گریڈ میں یا 7th میں وہ زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے اور بچوں کو اس چیز کا موقع ملتا ہے کہ ایک تو وہ ریڈنگ کا اسکل ڈیولپ کریں اور دوسرا وہ اس کی پریکٹس کرتے رہیں. سو we will ensure that in grade 6 what social studies material we are using and then the social studies material we want to use in grade 7th is much more broad and it's much more challenging as compared to it was in the previous grade. لہٰذا بچوں کا موقع ملے گا کہ وہ کمپلیکس اور مشکل مٹیریل پڑھ بھی سکتے ہیں, اپنی ریڈنگ ایبلٹی بڑھا سکتے ہیں, ریڈنگ کا اسکل بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کی پریکٹس بھی ہوتی جائے گی اور وہ نیا مٹیریل پڑھنے کی ایبلٹی بھی ڈیولپ کرتے چلے جائیں گے. سو کنٹینیوٹی اٹ انشورز that we are building upon the concepts or the skills we want to develop in one grade and then to build on this skill in the next grade so that there is a breadth and there is better understanding and ability to practice that skill at the same time to develop the skill further. For the purpose of continuity in the curriculum and to ensure that learning experiences are also organized in such a way that they are building upon each other and they are supporting, let's see if we want to teach the concept of energy in science at any grade level and we want that there is continuity and this objective, how it will appear in the curriculum which you are developing. You will write in your curriculum and you will ensure that this concept is being taught or dealt with again and again in various parts of the course. So since we say continuity ensures that there is vertical relationship between the learning experiences which we are giving to the students, so there will be chances and we will ensure that while we are moving from grade to grade, for example from grade 6 to 7th or 7th to 8th, this concept will be repeated so that students can internalize this concept properly and they can also develop an in-depth understanding of the concept of energy. This is how there will be a continuity and students will not forget this concept and they will be able to apply this concept anywhere outside the school and in their daily lives. So we can say that continuity is a major factor while we deal with vertical relationship of learning experiences for the purpose of curriculum development. یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب ہم vertical relationship کہتے ہیں تو ہماری مراد یہ ہے کہ this is a building of either the concept, skills or values from grade to grade. So we have to ensure that learning experiences as they are designed for any kind of objective, whether it is for the concept development, it is for an attitudinal change or for any kind of skill development, we have to ensure that all these, they are building upon each other, they are being repeated and chances are given to the students so that they can further develop this skill so that in-depth understanding can take place and they can apply this knowledge to their everyday life issues and problems, which is one of the major purpose of educational process in the curriculum. So ہم نے جب یہ چیز ترتیب دے لی تو ہمارے کریکولم میں کنٹینیوٹی آف آبجیکٹیوز کے ساتھ ساتھ جہاں پر کنٹینیوٹی آف لرننگ ایکسپیرئنس بھی آتی ہے تو یہ ہمارے کریکولم میں اور ہمارے رائٹ اپ سے بالکل ایویڈنٹ ہو جائے گا کہ ہم نے کنٹینیوٹی کو انشور کر دیا ہے اینڈ دیر از اے ورٹیکل ریلیشن شپ.